will talk about classification of lipid, in which we study simple lipid and compound lipids. The first one is fats or triglycerides, or we also call them triacylglycerols. Fat are the fatty acid ester of glycerol and triacylglycerol. It means it contains one glycerol molecule and 3 fatty acids. Fat are the most common and widespread class of lipids in nature, being especially abundant in nuts, seed, and fat deposits of animals. Triacylglycerol represent the storage form of lipids. As far as the structure is concerned, 3R, R dash, R double dash, and R triple dash represent the alkyl radical of fatty acid and may be the same or different from each other. We can say it's a functional group of fatty acids. In this triacylglycerol, carbon number 2 of the glycerol molecule represent an asymmetric carbon atom because the fatty acid present in position number 1 and 3 are different. मैंने आपको बताया था कि asymmetric carbon वो होती है जिसके साथ 4 different groups साथ attach होते हैं. तो जो कार्बन नंबर 2 है इन द केस ऑफ फैट्स और ट्राइग्लिसराइड इज asymmetric कार्बन बिकॉज जो कार्बन नंबर 1 और 3 के साथ अटैच हैं वो डिफरेंट है. इट इज़ नेम डी बिकॉज कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल पार्ट शो द configuration of alkyl radical around it that is similar to the configuration of hydroxyl group around carbon number 2 of D glycerols. क्योंकि जो उसके साथ अटैच है वो राइट साइड पे है, तो इसलिए हम उसको डी शुगर का, जैसे शुगर का नाम देते थे इस तरह इसको डी ग्लिसरॉल्स का नाम दे रहे हैं. The properties of fats include specific gravity, which is lower than the water. The specific gravity of water is 1. So fats have lower than 1 specific gravity. Melting point of just like in previous lecture I explained the melting point property. It's the same with fats. The melting point of fat depend upon the constituent fatty acid. Greater the amount of unsaturated fatty acid in the fat molecule, low will be the melting point. Fats having a low melting point are liquid at room temperature and called oils. Pure fat possess no color, no odor or taste. The presence of these properties in fat is a result of foreign substances dissolved or mixed in fat. For example, the yellow color of butter is due to presence of plant pigments like keratin and xanthophyll. Next is chemical properties. The first one is hydrolysis. Hydrolysis, you know, addition of water and breakdown of bonds. So this can be accomplished by heating fat with water at high temperature and pressure. The complete hydrolysis of triacylglycerol into 1 molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acids. The hydrolysis of dietary fat is efficiently accomplished mostly by the enzyme lipase present in the pancreatic juice. It can be enzymatic and it can be with temperature. The next one is sponification and sponification number. By boiling with strong alkalis such as sodium hydroxide, the fat are readily decomposed into glycerol and salt of constituent fatty acid. The sponification number is defined as number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize the fatty acid liberated from 1 gram of fat. इसका मतलब है कि स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है. स्पोनिफिकेशन नंबर होता है कि 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर है. उस 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होते हैं उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर. द फैट विच मोस्टली हैव शॉर्ट चेन फैटी एसिड have a higher sponification number than those containing fatty acid with longer chain length. Butter fat has a relatively high sponification number as it is rich in short chain fatty acid. Reaction next one is iodination number. The double bond of unsaturated fatty acid is fat undergone the reaction such as hydrogenation, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था. हेलोजिनेशन और ऑक्सीडेशन की बात हम कल कर चुके हैं. द नेक्स्ट वन इज़ आयोडीनेशन नंबर. जिस तरह हम हेलोजिन्स जो हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में ऐड होती है और हम हेलोजिनेट
आयोडीनेशन जो है उसके इंडेक्स मैंने आपको कहा था कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का है। इसी तरह आयोडीनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच विल बी अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट इज टर्म्ड इट्स आयोडीन नंबर। 100 ग्राम ऑफ फैट में जितने ज़्यादा आयोडीन अब्जॉर्ब हो रहा है, जितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब हो रहा है, उसे हम कहते हैं आयोडीनेशन नंबर। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा आयोडीनेशन नंबर ज़्यादा होगी। अनसैचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोडीनेशन नंबर। Rancidity: many fat develop an unpleasant odor and taste when they are followed to stand in contact with air at room temperature. This is called rancidity. Rancidity is due to two different processes which are oxidative and hydrolytic in nature. Oxidation of fat molecule give rise to some short chain aldehyde and ketone which have objectionable taste and odor. The oxygen of the air is necessary for the occurrence of this type of rancidity. This can be prevented by the addition of antioxidants such as vitamin E to food. The hydrolytic type of rancidity is due to the slow hydrolysis of fat, which in case of fat like butter result in the liberation of short chain fatty acid which have rancid odor and taste. Hydrolysis of fat may be hastened by bacterial contaminants which produce enzyme called lipases. Rancidity also results in a loss of certain essential dietary compounds such as vitamin A, E, carotenes and alpha-linolenic acid. दो तरह की रेंसिडिटी होती है, एक होती है ऑक्सीडेटिव जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और वो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाती हैं। दूसरी होती है हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ जो बटर वाले आप कह सकते हैं सॉलिड चीज़ों में होती है, सॉलिड फैटी एसिड्स में होती है, सॉलिड फैटी एसिड में होती है। और वो क्या होती है, वो ड्यू टू एंजाइम होती है जैसे कि लाइपेसिस। The next one is waxes. Waxes are of two types. One is true wax and other is other waxes. True waxes are simple lipid which are ester of fatty acid with ethyl alcohol or other high molecular weight alcohol. Fatty acids such as myristic and palmitic are combined with alcohol that contain 12 to 30 carbon atoms. जो कॉमन नेचुरली एक्टिंग वैक्सेस हैं उनमें है बीज वैक्स, ये आती है बीज से, हनीकॉम से, लेनोलिन ये आती है वूल से और स्पेशस ग्लैंड से, शीप के एंड स्पर्मेक्टाई बेल के स्पर्म से. These rays occur in the structural part of honeycomb. Lanolin derived from wool is widely used as base for many ointments and creams. Spermactide derived from the sperm whale is used in cosmetics, pharmaceuticals and in the manufacture of candles. Because waxes cannot be hydrolyzed by the digestive enzyme lipase, therefore they are no nutritional importance. Waxes which are not type of two type include ester of cholesterol, vitamin and vitamin D. They are nutritionally important because they are digested by lipase enzyme. The next are compound or complex lipid including glycolipids, gangliosides, phospholipids. Glycolipids, or we can call it as glycosphingolipids. These are ceramide sugar, ceramide sphingosine fatty acid complex. Ceramide is basically one is containing sphingosine and fatty acid complex. What is sphingosine? Sphingosine is an 18 carbon monounsaturated alcohol. It an amino group. As you can see in the structure, it is an 18 carbon structure containing an amino group. And long chain fatty acid containing 22 to 26 carbon is attached to sphingosine at its amino group, forming what is called ceramide. Ceramide basically one is sphingosine molecule and one is fatty acid complex. स्फिंजोसिन मॉलिक्यूल के अमाइनो ग्रुप के साथ हमारे पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच होती है और उस कंप्लीट को हम कहते हैं सीरामाइड कॉम्प्लेक्स. Glycolipid basically are the ceramide complex and a sugar attached to it. Ceramide containing sphingosine and a long chain fatty acid. And with the sphingosine molecule, a 6 carbon sugar is attached. It can be glucose and it can be galactose. So the complete structure containing sphingosine, a long chain fatty acid and a sugar is called glycolipid.
but a ceramide is only a sphingosine or a fatty acid chain. Glycolipids occur mostly in white matter of the brain and in the myelin sheath of nerve fiber. Various glycolipids such as cerebrone, nervone, oxynervone and kerosene differ from each other in the type of fatty acid and or the type of sugar present in their molecule. Because sphingosine molecule remains same, fatty acid and the sugar can be changed. It can be glucose, it can be galactose, it can be both. A common fatty acid present in these compounds is a 24 carbon containing fatty acid, namely cerebronic acid. Glycolipid containing only one sugar unit are called cerebroside. Example of cerebroside are ceramide glucose and ceramide fructose. These occur in the plasma membrane of non-neural and neural tissues respectively. Ceramide glucose present in non-neural membranes and ceramide galactose present in neural tissues. A more complex glycolipid is ceramide trihexoside. Its composition is ceramide, glucose, galactose. Mean one ceramide, one glucose molecule and two galactose molecule. It can be converted to ceramide dihexoside, ceramide glucose and galactose by detaching one galactose molecule. Glycolipid have been found to be the determinant of blood group antigen A and B. The sugar molecule present in glycolipid may be sulfated, forming sulfatides, also called sulfolides. जो शुगर प्रेजेंट है ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, अगर हम उनमें सल्फर इनकॉर्पोरेशन कर दें तो उसकी सल्फेशन हो जाएगी. तो इस फॉर्म में भी ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. The next one is gangliosides. Ganglioside is the basic core structure is mostly ceramide, glucose, galactose, N-acetylgalactosamine and N-acetylmuraminic acid. जो gangliosides हैं उनके स्ट्रक्चर में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनमें है एक सीरामाइड, एक ग्लूकोज, एक ग्लैक्टोज, एक N-acetylgalactosamine और एक N-acetylmuraminic acid. Muraminic acid is one of the sialic acid. Ganglioside occur in brain, spleen, RBCs and nerve cells. In the brain, ganglioside contribute about 6% of the membrane lipid in gray matter. One important example of ganglioside is GM1. It occurs in the intestinal cell membrane and acts as the site of attachment to cholera toxins. Its structure is ceramide, glucose, galactose and galactose के साथ N-acetylmuraminic भी अटैच होता है और N-acetylgalactosamine भी अटैच होता है और फिर N-acetylgalactosamine के साथ एक galactose अटैच होता है. फर्स्ट एक सीरामाइड का मॉलिक्यूल, फिर ग्लूकोज का, फिर galactose का. galactose के साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं, एक N-acetylmuraminic एसिड, दूसरी N-acetylgalactosamine और फिर N-acetylgalactosamine के साथ galactose. Ganglioside GM2 has the structure ceramide, glucose, galactose के साथ अगेन दो चीज़ें N-acetylmuraminic एसिड और N-acetylgalactosamine. GM1 और GM2 के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक galactose का डिफरेंस है जो कि लास्ट पे अटैच होता है. Symbol M in these ganglioside means that they contain only one molecule of sialic acid. More complex gangliosides can have several of these acids. As you can see the structure of ganglioside, it's GM1, ceramide, glucose, galactose. Galactose it is attached with two things. One is N-acetylgalactosamine, the other one is N-acetylmuraminic acid, and with N-acetylgalactosamine a galactose molecule again attached. GM means means it contains only one sialic acid. The next is globoside. Closely related to glycolipid are compound called globoside, said to be mucolipids. The core structure of globoside is ceramide, glucose, galactose, and N-acetylgalactosamine. They are present in erythrocyte and it work as a receptor for adhesion and cell communication. The next one is phospholipid. The first one is sphingophospholipid. We also call them sphingomyelins.
These compounds are represented by various types of sphingomyelin. Their molecules have the structure ceramide, phosphocholine और ceramide phosphoethanolamine. या तो वो ceramide phosphocholine होंगे, मतलब उनमें कोलिन का और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, या ceramide phosphoethanolamine प्रेजेंट होगा. Sphingomyelin are present in large amount in the brain and nerve tissue and in smaller amount in other tissues and blood. Because sphingomyelin certain phosphocholine or phosphoethanolamine, therefore they possess polar group resembling glycophospholipid. Sphingomyelin are more stable molecule than glycerophospholipids. Here is the ceramide phosphocholine structure that we can call sphingomyelin. One sphingosine molecule, a phosphoric attach, and a choline molecule. Basically, phosphoric acid attaching sphingosine and choline molecule, making ceramide phosphocholine. Glycerophospholipid, these are also called phosphoglycerides or glycerol phosphatides. These are the phospholipids containing glycerol, fatty acid, phosphoric acid, and in many cases a nitrogenous base as well. They occur in all cell, plant as well as an animal. That they are very important as constituent of cellular structure by the fact that they do not undergo rapid mobilization during starvation as happen to the neutral fat. It means जब हम starvation में जाते हैं तो जिस तरह न्यूट्रल फैट जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है वो रेडिली जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके, लेकिन जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है वो रेडिली मोबिलाइज नहीं होते कि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके. These compounds are not freely soluble in water but are water miscible, that do not make true solution in water but they disperse forming micelles. जैसे वाटर के ऊपर ऑयल के वाटर के ऊपर ऑयल मिक्स करने की कोशिश करते तो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं ना, उसी तरह ये माइसेल्स फॉर्मेशन करते हैं. दे आर गुड इमल्सिफाइड एजेंट. Phosphatidic acid, it is one of the type of glycerophospholipid. It resembles with the structure of triglyceride, but one carbon attached fatty acid is replaced by phosphoric acid. For example, there is structure triacylglycerol on the left side and on the right side is the phosphatidic acid. So you can see on the carbon number 3, one fatty acid is replaced by phosphoric acid, forming phosphatidic acids. They are present in cells in small amounts only. The next one is lecithin. Lecithin, you can say, is an advanced form of phosphatidic acid because it's slightly changed in the structure of phosphatidic acid to form lecithin. These are derivative of L-phosphatidic acid in which choline, a nitrogenous base, is joined to phosphoric acid. जो हमने फॉस्फोटाइडिक एसिड 3 कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच किया था उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस कोलिन अटैच हो जाती है जिसको हम कहते हैं लेसिथिन, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड फॉस्फोटाइडल कोलिन. एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑन 3 कार्बन नंबर अ फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू विच अ कोलिन मॉलिक्यूल इज अटैच. collectively all molecule is called lecithin. Choline is trimethylethanolamine and is quaternary ammonium compound which is strongly bases as sodium hydroxide. Depending upon the type of fatty acid are attached. For example, both of its fatty acid may be saturated, may be unsaturated, maybe one saturated and other is unsaturated. Lecithin are soluble in all fat solvents except acetone. They are white waxy materials. They are most abundant of phospholipid in cell membrane, serum and bile. They are good emulsifying agent for fat. Lecithin containing 2 molecules of palmitic acid called dipalmitoyl lecithin occur in surfactant. सर्फेक्टेंट जो होता है वो सिक्रीट करते हैं एल्वेओलाई सेल जो कि लंग्स को क्या करता है एक्सपेंड रखता है और उन्हें रप्चर नहीं होने देता, ठीक है, उन्हें कोलैप्स नहीं होने देता. Surfactant has a surfact-tension lowering effect and is of great help in facilitating lung expansion at birth and later.
The potentiality of the lungs to expand after birth can be precipitated by a chemical analysis of the amniotic fluid. If the ratio of lecithin to sphingomyelin in the fluid is high, it means normal condition. मतलब अगर लेसिथिन हाई है टू स्फिंजोमाइलिन तो क्या है कि सर्फेक्टेंट जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, सर्फेक्टेंट ज़्यादा है तो वो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देगा, तो मतलब लंग्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट. Lecithins are convertible to lysolecithin by the enzymatic removal of one of fatty acid group attached to either carbon number 1 or 2. कार्बन नंबर 3 के साथ फैटी एसिड अटैच नहीं है, कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ अटैच है, थर्ड पे फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन अटैच है. तो अगर हम कार्बन नंबर 1 से या 2 से एक फैटी एसिड ग्रुप रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा लाइसोलेसिथिन. द लेटर कंपाउंड कॉज हिमोलिसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट. The enzyme catalyzing the conversion of lecithin to lysolecithin is called phospholipase A and is found in snake venom. This enzyme is of two types, A1 and A2, which catalyze hydrolysis of carbon number 1 and 2 respectively. If we remove one carbon from one carbon, so it called A1 phospholipase. अगर हम कार्बन 2 से फैटी एसिड रिमूव करेंगे तो उसे हम कहेंगे phospholipase A2. 3 more phospholipases are found. These are phospholipases B, C and D. Phospholipase B, also called lysophospholipase, act on the lysolecithin and remove the remaining fatty acid. अब जो lysolecithin में एक फॉस्फो फैटी एसिड रह गया था वो भी रिमूव कर देता है B, तो उसको हम कहते हैं lysophospholase enzyme. Phospholipase C acts the lecithin molecule at carbon number 3, liberating diacylglycerol and phosphocholine. Phospholipase D liberate choline from the lecithin molecule, leaving behind phosphatidic acid. जो D का काम है वो ये है कि वो कन्वर्ट करता है, आप कह सकते हैं लेसिथिन को फॉस्फोटाइडिक एसिड में, ठीक है, क्योंकि वो कोलिन मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है. These enzymes act on cephalin in the same way as on the lecithin. The next one is cephalin. Cephalin resembles to lecithin, but choline is replaced by ethanolamine. You can say phosphatidic acid के साथ अब choline की जगह हमने ethanolamine लगा दिया है तो उसे हम कह रहे हैं cephalin. They are structurally identical with lecithin except that the base choline is replaced by इथेनोलामीन, सीरीन, इनोसिटोल और थ्रियोनीन. ऑन द बेसिस ऑफ जो भी ग्रुप उसके साथ अटैच है उसकी बेस पे हम उसको नाम देंगे. अगर इथेनोलामीन अटैच है तो हम उसे कहेंगे फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन. अगर सीरीन अटैच है तो हम उसे कहेंगे फॉस्फोटाइडल सीरीन. अगर उसके साथ इनोसिटोल अटैच है तो हम कहेंगे फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल एंड सेम फॉर फॉस्फोटाइडल थ्रियोनीन. जो कुछ ऑथर्स हैं वो सिफेलिन को जो है वो फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन तक ही लिमिटेड रखते हैं, बट इट कैन बी क्लासीफाई जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी बेस पे. सिफेलिन्स आर सो नेम बिकॉज दे अकर इन हाई कंसनट्रेशन इन ब्रेन टिश्यू. Cephalin have properties generally similar to lecithin and occur in association with them. However, they are more acidic than lecithin. They also take part in clotting of blood. The next one is plasmalogens. Plasmalogens resemble lecithin and cephalin in structure, but instead of containing a fatty acid, they contain a vinyl ether substituted at carbon number 1 of glycerol, and on hydrolysis liberate a higher fatty acid aldehyde instead of a fatty acid. कार्बन नंबर 3 पे तो ऑलरेडी फॉस्फोरिक एसिड अटैच है और उसके साथ यहाँ तो कोलिन अटैच है, यहाँ इथेनोलामीन अटैच है. लेकिन कार्बन नंबर 1 के साथ विनाइल ईस्टर अटैच है, वो फैटी एसिड वहाँ से रिमूव होके विनाइल ईस्टर जो है वो अटैच होता है. और जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फैटी एसिड नहीं रिलीज़ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिलीज़ होता है. इन मोस्ट प्लाज्मिनोजेंस द बेस इज इथेनोलामीन, दो कोलिन, सीरीन और इनोसिटोल में भी प्रेजेंट. Plasmalogens are chiefly found in skeletal muscle, heart, brain, liver and platelets. Plasmalogens appear to be resistant to phospholipases. One of the related compound is the platelet activating factor, which is released from basophils. It stimulates the aggregation of platelets and release serotonin from them. Last one is phosphatidylglycerol.
फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल जो फॉस्फोटाइडिक एसिड का फॉस्फोरिक एसिड था उसके साथ जो है अब कोई कोलिन, इथैलोनमीन, सीरीन कुछ नहीं अटैच, उसके साथ एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अटैच है, तो उसको हम क्या देते हैं फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। और इसको हम कार्डियोलिपिन भी कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन में जो है इसका फंक्शन इन्वॉल्व है।